Hello, welcome to my channel. Today we will discuss the whole summary of the semester 2 of the paper Ethics and Values. আজি आमे सेकेंड सेमिस्टर रो एथिक्स एंड भैल्यूज नैतिकता और मूल्यबोध संपूर्ण सारांश कहिबा उभय इंग्लिश एवं ओडिया रे। आगो को ए सप्ताह रे मु आउरी 4टी वीडियो अपलोड करिवि जेउथिरे कि यूनिट 3 और यूनिट 4 रो किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क एवं 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चंस एवं किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नेकी मु आउरी 4टी वीडियो अपलोड करिवि ए आगे ए सप्ताह रे। तो तुम मैंने मोर चैनल प्रथम थर देखुच मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं आसतु आज वीडियोटी बहुत बहुत इंपोर्टेंट समस्त आज वीडियोटी देखला तुम मान गोटे बहुत सविशेष आइडिया और विवरणी धारणा आसीज जो सिलेबस केमी क्वेश्चन आसो क्या क्वेश्चन आसो जो 4टी यूनिट अच्छी क्या आधारित। तो आसतु आरंभ करवा आज वीडियोटी the whole summary of the semester 2 ethics and values. So dear students, let us discuss the whole summary of ethics and values for second semester both in English and Odia. आमे संपूर्ण सारांश को डिस्कशन करिबा यूनिट वाइज चैप्टर वाइज 4टी यूनिट अछि ता होची यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, यूनिट 2 पैट्रियोटिज्म देशप्रेम व देशभक्ति, यूनिट 3 वॉलंटरिज्म स्वेच्छासेविता, यूनिट 4 वर्क एथिक्स कार्य नैतिक। तो आसतु आम यूनिट वाइज प्रति यूनिट रो सारांश उभय इंग्लिश और ओडिया रे कहिबा एवं जानिबा। प्रथम यूनिट यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। The constitution of any nation serves many purposes and lays down certain principles that generally mold the society. A constitution also symbolizes independence of a country. The framework and structure for governance of a free country are provided in the constitution. A country is typically made up of diverse groups of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. So, it is through the constitutional principles, rules and procedures consensus is built amongst different communities. Constitutional rules decide the fortune of the country. These prescribe certain ideas that a country should uphold. In the context of our country, that is India, the core values and visions reflected in the preamble are expressed as objectives of the Constitution. The core values and objectives found in the preamble are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character of Indian state, justice, liberty, equality, fraternity, human dignity and the unity and integrity of the nation. एबे आसंतु ए यूनिट 1 रो सारांश को ओडिया रे जानिबा। जे कोनोसी राष्ट्र संविधान अनेक उद्देश्य रे सेवा करे एवं किछि नीति निर्धारण करे जहा साधारणतः समाज को गढ़ी थाए। एक संविधान मध्य देशर स्वाधीनतार प्रतीक अटे। एक मुक्त देशर शासन पई ढांचा एवं गठन संविधान रे प्रदान करा दैछि। एक देश साधारणतः विभिन्न गोष्ठीर लोकों को नहीं गठित, तेणु सबु लोक माने समस्त प्रसंग रे अवश्य सहमत होई पारंती नाही। सेथिपाई सांविधानिक नीति नियम एवं प्रणाली माध्यम विभिन्न संप्रदाय मध्य सहमति सृष्टि हुए। सांविधानिक नियम देशर भाग्य निर्णय करे। यह केतक आदर्श को वर्णना करे जहा देश को समर्थन करने उचित। आम देश अर्थात भारत प्रसंग
प्रस्तावना प्रतिफलित मूल मूल्य एवं दर्शन गुड़िक संविधान उद्देश्य भाव प्रकाश करा जायଥାଏ। प्रस्तावना मिलुथिबा मूल मूल्य एवं उद्देश्य हेउची सार्वभौमत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्र, भारतीय राष्ट्र गणतंत्र, न्याय, स्वाधीनता, समानता, भ्रातृभाव, मानविक सम्मान एवं जातिर एकता एवं अखंडता। तो ये थिला यूनिट 1 चैप्टर 1 प्रथम अध्याय जहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान सारांश बोथ इन इंग्लिश एंड ओडिया। एबे आमे जिबा यूनिट 2 बा चैप्टर 2 जहाँ होची पैट्रियोटिज्म बा देश प्रेम बा देशभक्ति। नेशन बिल्डिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क. Good citizens are the backbone of a nation and pillars of nation building. They are genuine patriots. Patriotism, though defined as one's love for one's motherland or fatherland, has various shades of training and can be shrouded in ambiguity. There are blind or destructive patriotism and genuine or constructive patriotism. Blind patriotism obstructs in nation building, whereas constructive patriotism is the backbone of nation building. Patriotism differs significantly from nationalism. While patriotism means love and pride for one's nation or attachment to one's nation, nationalism means a preoccupation with national superiority and an orientation towards national dominance. Patriotism is also a constitutional concept. The state demands some duties from its citizens. In the Indian context, the fundamental duties entrenched in our constitution constitute constitutional patriotism. ये थिला यूनिट 2 रो समरी इन इंग्लिश। एबा आसंतु यूनिट 2 रो सारांश जानिबा ओडिया रे। राष्ट्र निर्माण निश्चय एक कष्टसाध्य कार्य। उत्तम नागरिक माने एक जातिर मेरुदंड एवं राष्ट्र निर्माणर स्तंभ। सेमाने हेउछन्ति प्रकृत देशप्रेमी। देशप्रेम कहले निज मातृभूमि आ पितृपुरुष प्रति थिबा प्रेम भक्ति भाव में परिभाषित। देशप्रेम साधारणतः दुई प्रकार। प्रथम होची अंध किंवा विनाशकारी देशप्रेम एवं द्वितीयटी होची प्रकृत बा गठनमूलक देशप्रेम। राष्ट्र निर्माण में अंध देशप्रेम बाधा सृष्टि करुवा बेले गठनमूलक देशप्रेम होची राष्ट्र निर्माणर मेरुदंड। देशप्रेम जातीयता ठारू यथेष्ट भिन्न अटे। देशभक्तिर अर्थ होची निज देश पई प्रेम एवं गर्व किंबा निज जाति प्रति संलग्नता। जातीयतार अर्थ होची जातीय श्रेष्ठता सहित एक प्राधान्य एवं जातीय प्राधान्य प्रति एक आभिमुख्य। देशप्रेम होची एक सांविधानिक धारणा। राष्ट्र नागरिक ठारू किछि कर्तव्य आशा करे एवं दाबी करे। भारतीय प्रसंग में आम संविधान रे अंतर्भुक्त मौलिक कर्तव्य गुड़िक सांविधानिक देशप्रेम गठन करे। ये थिला यूनिट 2 बा चैप्टर 2 जहाँ कि पैट्रियोटिज्म बा देशप्रेमर होल समरी बा सारांश उभय इंग्लिश एवं ओडिया। एबे आसंतु जिबा यूनिट 3 बा चैप्टर 3 वॉलंटियरिज्म स्वेच्छासेविता यार सारांश जानिबा। Volunteering is an individual or collective trait that builds a sustainable foundation of society. Volunteerism stands for the noblest aspiration and deeds. Volunteering has the potential to transform the world into a much better place. Volunteerism is immensely beneficial to both the individual and society.
volunteering transcends all caste and religious barriers. It is also necessary that volunteerism accord its due social recognition in the conventional definition. Volunteerism is an act without any vested interest or any payment, not even expectations of financial benefit to oneself. From a historical perspective, volunteerism emerged in the late Middle Ages in Europe. Then its volunteerism was considered a religious duty. Altruism, passion for services, empathetic nature, non-judgmental attitude, clarity in thought and expression, patience, proactive personality, commitment, reliability, teamwork and shared vision, humility, lifelong learning and conflict resolution are essential traits of a volunteer. Volunteerism can be observed in the blood donation, organ donation, cleanliness and save the environment campaign, caring for senior citizens, working with underprivileged children, volunteering with the police and suicide watch volunteering. So these are some voluntary acts. ये थिला यूनिट 3 रो volunteerism रो होल समरी इन इंग्लिश. एबे जानिबा ओडिया रे संपूर्ण सारांश. स्वेच्छासेवी हेउची एक व्यक्तिगत बा सामूहिक गुण जहाँकि समाजर एक स्थायी भित्तिभूमि निर्माण करे. स्वेच्छासेवी श्रेष्ठ आकांक्षा एवं कार्य छिड़ा हुए. विश्व को एक उत्तम स्थान में परिणत करिबारे स्वेच्छासेवी मानकर सामर्थ्य अछि. स्वेच्छासेविता उभय व्यक्ति एवं समाज अत्यंत लाभदायक अटे. स्वेच्छासेवी समस्त जाति एवं धार्मिक प्रतिबंध को अतिक्रम करे. पारंपरिक परिभाषा रे स्वेच्छासेविता यार उचित सामाजिक स्वीकृति प्रदान करे. स्वेच्छासेविता हेउची कौनसी स्वार्थ किबा कौनसी देय बिना एक कार्य. एपरिकी जन स्वेच्छासेवी निज पई आर्थिक लाभर आशा मध्य रखे नाही. एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण यूरोप रे मध्य युगर शेष भाग में स्वेच्छासेविता उत्पन्न होइतिला. तापरे स्वेच्छासेवी एक धार्मिक कर्तव्य भाव में विवेचना करागला. एक स्वेच्छासेवी अत्यावश्यक गुणगुड़िक हेउची निस्वार्थपरता, सेवा प्रति आग्रह, सहानुभूतिशील प्रकृति, आक्षेपविहीन मनोभाव, चिंता और अभिव्यक्तिर स्वच्छता, धैर्य, सक्रिय व्यक्तित्व, प्रतिबद्धता एवं निर्भर योग्यता, दलगत कार्य एवं सहभागी दृष्टिकोण, नम्रता, आजीवन शिक्षा एवं द्वंद्व समाधान. ये होची गोटे प्रकृत स्वेच्छासेवी गुण. स्वेच्छासेवी पालन करिबार विभिन्न दिग गुड़िक हेउची रक्तदान, अंगदान, परिष्कार परिच्छन्नता तथा परिवेश अभियान, वरिष्ठ नागरिक जत्न नेबा, मौलिक सुविधार वंचित पिलामानक सह काम करिबा, पुलिस सहित स्वेच्छासेविता तथा आत्महत्या को रोकिबा इत्यादि इत्यादि. एगुड़िक होची एक स्वेच्छासेवी कौन कौन कौ वे स्वेच्छासेवी कौ बाटर कौ उपाय स्वेच्छासेवी कर लोक समाज को सेवा जोगाई पार. ये थिला यूनिट 3 वॉलंटियरिज्म स्वेच्छासेवितार होल समरी संपूर्ण सारांश उभय इंग्लिश एवं ओडिया. एबे आसंतु जानिबा यूनिट 4 शेष चैप्टर शेष अध्याय वर्क एथिक्स कार्य नैतिकतार होल समरी संपूर्ण सारांश. Work ethics are defined as belief in work as a moral good, a set of values centered on the importance of doing work and reflected especially in a desire or determination to work hard. Since ancient times, people of different parts of the world perceived work ethics in different ways. Ancient Indians in ancient times believed that work is worship,
Ancient Egyptians, Mesopotamians, and the followers of the Abrahamic religious valued both individual ethics and work ethics. Positive work ethics brings success to an individual and also to an organization. The components of positive work ethics are diligence, resourcefulness, conscientiousness, reliability, dedication, discipline, productivity, cooperation, integrity, professionalism, punctuality, accountability, cleanliness, rational thinking, scientific attitude, positive attitude, gender sensitivity, and clarity in thinking, etc. So, these are the positive work components of positive work ethics. Then, from students to all kinds of professionals, personal and professional ethics are essential. For students, personal appearance, dress, hygiene, manners, etc. are necessary for securing their safety and success in life. In the present time, multiple challenges complicate work ethics. ICT, that is Information Communication Technology, is used widely in workplaces today, and these call for a reassessment of work ethics. Rising religious fundamentalism in the place of secularism, the emergence of multinational and multicultural organizations and workforces, global environmental challenges, unequal distribution of wealth amongst nations and people, persisting poverty, large-scale displacement due to war, etc. are few contemporary challenges which can be met only through science, technology, and an ethical approach. When individuals recognize the meaning and significance of work ethics, they will enhance their career prospects, achieve organizational goals, and improve the organizational overall structure. एबे जानिबा सारांश को ओडिया रे कार्य नैतिकता कहले कार्य उपरे विश्वास एक नैतिक उत्तम भाव मूल्यबोधर एक सेट जहाँकि कार्य करिवार गुरुत्व उपरे निर्भर करे एवं विशेष भाव में कठिन परिश्रम करने को इच्छा किंवा संकल्प प्रतिफलित हुए। प्राचीन काल विश्वर विभिन्न प्रांतर लोक माने कार्य नैतिकता को विभिन्न उपाय अनुभव करते। प्राचीन काल भारतीय माने विश्वास करते कार्य होची उपासना, कर्म ही भगवान। प्राचीन इजिप्टीय, मेसोपोटामियान एवं अब्राहम धर्म अनुगामी माने उभय व्यक्तिगत नैतिकता एवं कार्य नैतिकता को गुरुत्व देते। सकारात्मक कार्य नैतिकता जड़े व्यक्ति एवं एक संस्था मध्य सफलता आनी। सकारात्मक कार्य नैतिकार उपादान गुड़िक होउची परिश्रम, संबल, विवेक, विश्वसनीयता, उत्सर्गीकृत, श्रृंखला, उत्पादकता, सहयोग, अखंडता, वृत्तिगतता, समयानुवर्तिता, उत्तरदायित्व, परिष्कारता, युक्तियुक्त चिंताधारा, वैज्ञानिक मनोभाव, सकारात्मक मनोभाव, लिंग संवेदनशीलता, भावनार स्वच्छता इत्यादि। तो ये थिला सकारात्मक कार्यनैतिकार उपादान गुड़िक। छात्र आरंभ कर समस्त प्रकार वृत्तिगत लोक निकट व्यक्तिगत एवं वृत्तिगत नैतिकता जरूरी। छात्र मानक व्यक्तिगत रूप, पोशाक, स्वच्छता, आचरण इत्यादि सेमानकर सुरक्षा एवं जीवन में सफलता पाइबा आवश्यक। आज कार्य क्षेत्र में आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जहाँ सूचना जोगाजोग और प्रजुक्ति विद्या कहुची बहुल भाव में व्यवहृत हुए एवं कार्य नैतिकतार पूर्ण मूल्यांकन यह एक आह्वान। वर्तमान समय रे एकाधिक चैलेंज कार्य नैतिकता को जटिल करिଥାଏ।
ଯଥା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ସ୍ଥାନରେ ଧାର୍ମିକ ମୌଳିକତାର ବୃଦ୍ଧି, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ବହୁସଂସ୍କୃତି ସଂଗଠନ ତଥା କର୍ମଶାଳାର ଆବିର୍ଭାବ, ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ଆହ୍ୱାନ, ଦେଶ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ସମସାମୟିକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ଆଜିର ଏହି ବିକଶିତ ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିହେବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନୈତିକତାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆଶା ବଢ଼ାଇବେ, ସାଂଗଠନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସାମରିକ ସଂରଚନାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଲ୍ ସମରି ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ର ସାରାଂଶ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର 2ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି 4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁନିଟ୍ 3 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 4ର କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ଓ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।